Do you use Twitter? Do you use Bing? Or do you know about Bing AI? Or have you tried to use them together? तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे Bing AI कैसे तब्दील करने वाला है The landscape of Twitter. जो नहीं जानते, मेरा नाम डॉक्टर शुएब है और मैं UK में एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, but at the same time I'm a data scientist as well, and I love making models, but more importantly I love testing and using them. So at this point in time, both of them, they've merged together. So अब आपको Bing AI के अंदर you can get the access to the Chat GPT 4 and its recent features. So हम कुछ टेस्ट इसमें करेंगे, लेकिन एक fascinating टेस्ट जो मैं हमेशा से करना चाह रहा था वो इसकी live interaction with the web pages which are open इसके साथ था. So I've got a lot of interesting tests lined up. So this is going to be an interesting episode. So stick around for that. At this point in time, आप देख सकते हैं कि जो right side पे window है, this is Edge browser, और Edge में भी Edge dev version है जो आपने डाउनलोड करना है. So उसके अंदर आपको ये एक्सेस मिलता है Bing का, जो टॉप राइट कॉर्नर के अंदर यहाँ पे इसमें नज़र नहीं आ रहा, but there is a small logo which is representative of Bing. उसको आप क्लिक करते हो तो राइट साइड से ये विंडो खुलती है, and you can see on the right side we've got a window where we can talk to Bing, और लेफ्ट साइड के अंदर आप देख रहे हैं कि there is obviously the Twitter account or Twitter account of mine which is open at this point in time. पहला टेस्ट है general screening of the page and context identification. So basically, as you can see on the right side, prompt was pretty simple कि what's the most recent updates that you can get from the page which is currently open, and give me all of those as bullet points. So इसने bullet points तो दिए, इसने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं कि this is basically a Twitter home line जिसमें काफ़ी डिफरेंट ट्वीट्स आपको नज़र आ रही हैं, उर्दू लैंग्वेज में है, इट्स अबाउट पाकिस्तान आइडेंटिफाई कर रहा, पॉलिटिकल सिनेरियो इसने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया है. सेकंड टेस्ट वाज अबाउट कि थोड़ा सा और डीप जाते हैं और इससे स्पेसिफिकली पूछते हैं कि इस जनरल टाइमलाइन के अंदर अगर मैं किसी एक शख्स का नाम लेके इससे पूछूं कि वो क्या कह रहा है, क्या ये उसको आइडेंटिफाई करके आपको बता सकता है, अगेन जो पेज ओपन है. सो इस टेस्ट के अंदर मैंने स्पेसिफिकली पूछा, और बाय द वे वी आर टॉकिंग अबाउट 15th of March, सो आज काफ़ी कुछ हुआ है लाहौर के अंदर और जमान पार्क में. सो बट अगेन आई वाज वेरी स्पेसिफिक. मैंने कहा ये बताएं कि टेल मी व्हाट इज़ इमरान खान सेइंग इन दीज ट्वीट्स एंड especially which are open on the page, and summarize this for me. So this is what it had to say. So Imran Khan is a former prime minister, blah blah blah, who was ousted from power in April 2022. So इसने ये context समझा है कि ये सब हो रहा है. And interestingly, it gives you a reference for that. Encyclopedia, Wikipedia से ये निकाल रहा है. But anyways, ये इसने एक general introduction दिया है. फिर उसके बाद ये बताता है he has been leading a protest march against the central current government, claiming that there is a plot to abduct and assassinate him. Again, ये जो article है, this is probably Sky News and operation to arrest Pakistan, Imran Khan. So I think इसने यहाँ से इसको लिया है. Then he says कि अब ये आता है इस पेज के ऊपर कि he posted images of bullets that he said were used by the security forces to attack his convoy. He also praised his worker Usman Jora, who saved a lady from direct firing of Rangers and Punjab police. यहाँ पर ये थोड़ा सा realistic यानी आज के हालात बता रहा है. And he said that he saw the spirit of commitment and passion of his workers in the face of violence. Right, so इसने कुछ चीज़ें तो स्टार्ट में बेसिकली जेनरिक बताई हैं, विकीपीडिया से पुल आउट की हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसने स्पेसिफिकली इस पेज में जो मेंशन्ड हैं वो बताई हैं, और वेरी क्लियरली इसको इस बात का अंदाज़ा है कि यहाँ पर ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं बाकायदा, एंड दैट्स द पिक्चर. सो इट वाज स्मार्ट इनफ कि इसने इस पेज को स्टडी किया, इसमें तस्वीरें देखी हैं, इमेजेस, और उसको डिस्क्राइब किया है कि उसके अंदर क्या हो रहा है और क्या बताने की कोशिश की जा रही है. बड़े इंटरेस्टिंगली इसने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि डिफरेंट ओपिनियंस और रिएक्शंस और इमोशंस हैं अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री, सो इट नोज दैट मच. So this is really scary what I've basically currently asked him to do, and basically ये लिखे जा रहा है. So prompt बड़ा simple था. Again, the idea is summarization of a page which is already open, especially Twitter. So question मैंने इससे किया कि identify the people who are mentioned on the open
page currently, and then make a list of their names. मैंने कहा वो उन सब लोगों के नाम दें जो कि mention हुए हैं इस Twitter timeline के ऊपर जो मेरी open है. And it gave me this list जिसमें इसने सिर्फ नाम नहीं दिया है, आई थिंक इसने लिंक किया हुआ है विकिपीडिया के आर्टिकल्स को उन लोगों के हवाले से. इट माइट बी राइट, माइट बी रॉन्ग, लेकिन सनम जावेद खान, पलवशा अब्बासी, फिर इसने लैंड रोवर को मेंशन किया विच इज़ आई थिंक एन एड, इमरान खान, इकरारुल हसन, फिर अब्बास सिक्योरिटी विच इज़ एन एड एज वेल. सो इसने एटलीस्ट 3 or 4 top people have been identified which have been either mentioned in these tweets. कुछ obviously जैसे for example फजल रहमान को आइडेंटिफाई नहीं कर सका, लेकिन I think जो जिस बुनियाद पे ये कह रहा है these are those reasons कि इनकी tweets मेरे ख्याल में टॉप पर हैं. फिर इसने इसको आइडेंटिफाई किया है, इमरान खान को आइडेंटिफाई किया I think, फिर इकरारुल हसन आ गया, एहसन इकबाल, और इनको ये नहीं किया. I think it didn't go that deep on into the page. But then you can obviously ask it to go deeper. But this is amazing the way it's basically trying to extract the information and trying to summarize this for you. The thing which I was noticing is probably it was not mentioning those people who came down below. So what I did was basically scroll below, go down to a certain point, और उसके बाद मैंने इसको कहा कि complete करो इस list को, complete the list as I've scrolled down. And then it gave me a few other Twitter handles and their names. So as a final add-on to this first test, I basically asked it to tell me a bit more about this second person, which was Palwasha Abbasi. And it basically gave me a lot of things about her, including she's a politician, member of PTI, she's a part of the Women Wing, PTI Deputy Director, and all of that, MBBS degree as well, according to the LinkedIn profile, which is very, very creepy and interesting at the same time. It has gone to the LinkedIn profile and pulled that out. You can realize कि कितनी पावर आपके पास आ जाती है कि आप क्या कुछ इससे उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं किसी भी बंदे के बारे में. और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है ये चीज़ जब आप इसकी API को यूज़ करें to combine this supreme knowledge that you can get and then use it in other ways to, basically create products. So now the next test was about कि किसी की प्रोफाइल आप खोलें और उसमें मज़ीद डिटेल्ड आप क्या कर सकते हैं. So इस केस में मैंने इमरान खान की प्रोफाइल खोली. There's a lot of things are happening as we speak. So पहला prompt बड़ा सिंपल था कि pull out the most recent stories or tweets from this open page and list them. इसमें यह फेल हुआ क्योंकि इसने पहली चीज़ जो बताई वो विशिंग बाबर आजम एंड हिज टीम ऑल द बेस्ट. आज 15th of March को ये मुझे नहीं लगता कि ये इतना इमरान खान के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि वो बाबर आजम को विश करे. सो दैट वाजंट राइट क्योंकि इसको जब मैंने क्लिक किया तो ये मुझे 20 लेट्स ओपन दिस अप एंड दिस इज़ बेसिकली टेकिंग अस to an old tweet by Imran Khan, I think in November 2022. So it's an old tweet, so probably again from memory इसने शायद pull out किया हो. लेकिन जो दूसरी चीज़ें इसने mention की हैं यहाँ पर इसने बात की है कि लाहौर का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ about 7 hours who walked with our rally for 7 hours. So it seems like ये बात हो रही है जो अभी recently rally हुई है 2 दिन पहले. So again it's not the most recent. मैंने इसको फिर specifically पूछा कि इमरान खान की tweets में से most recent tweets आप निकालें और मुझे बताएं. Again it failed in that test. लेकिन फिर मैंने ये एक tweet खोली इमरान खान की और मैंने specifically पूछा कि इस tweet के अंदर इमरान खान क्या कह रहा है, इसको explain करो. It was pretty accurate in this case. ये उर्दू में लिखी है इमरान खान ने, but it was able to read, understand and translate into English. This is really interesting. इस टेस्ट के अंदर मैंने बेसिकली एक ट्वीट खोली है और इसके अंदर इसने इमरान खान ने एक ट्वीट की हकीकी आज़ादी के ऊपर. सो मैंने इसको इनिशियली तो मैंने पेज के लिंक से पूछा कि ये क्या कह रहा है इस वक्त. सो इसने बेसिकली समझा नहीं कॉन्टेक्स्ट एंड बेसिकली आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. Then what I did, and it basically asked me to do that, is provide it with the link of the page. तो मैंने इस ट्वीट के पेज का लिंक इसको दिया और कहा कि मुझे समझाओ कि ये कहना क्या चाह रहा है. Then it understood what we are talking about and then gave me a bit more information about what Imran Khan means by Hakiki Azadi and this freedom, the struggle of youth and how nations rise to the top, and basically is truly like summarizing the whole idea.
और सब्सिक्वेंट टेस्ट मैंने ये किया कि अगेन क्योंकि URL को रिस्पॉन्ड करता है, सो आई टुक द URL ऑफ इमरान खान्स ट्वीट इमेज, ये वाली जो इमेज है, और इसको मैंने इसको प्रोवाइड किया। सो इसका आंसर इसने इस तरह से दिया कि द इमेज इन दिस ट्वीट शोज अ पिक्चर ऑफ बुलेट एंड अ शेल केसिंग, दिस वाज ट्वीटेड बाय इमरान। सो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इज प्रोबेबली अ different image. Let's open that. Yeah, exactly. So probably इसने दूसरी इमेज कहीं से कलेक्ट की है इमरान खान की, this one. So and the interesting bit is I think इसने ये context लिया इस page से, which is sky.com, and then it told me about that. But essentially it was not telling me exactly about the image that I was asking him in the first place. Even मैंने उसको जब एग्जैक्ट इमेज का लिंक प्रोवाइड किया, इट स्टिल डिडंट टेल मी एनीथिंग। इन फैक्ट इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, सो द इमेज कैपेबिलिटी इज स्टिल नॉट देयर। फाइनली आई विल एंड दिस विद दिस ऑप्टिमिस्टिक ट्वीट दैट आई आस्क्ड इट टू मेक। सो मैंने इसको बेसिकली कहा कि एक ऑप्टिमिस्टिक होपफुल ट्वीट क्रिएट करो बेस्ड ऑन वट एवर दैट हैज़ हैपेंड इन ज़मान पार्क टुडे। So a lot of things have happened, but let's see what it did it right actually. And I asked it to specifically write in Urdu. तो ये कहता है कि आज ज़मान पार्क में जो कुछ हुआ उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी आवाम ने इतना हौसला दिखाया और अपनी आज़ादी का हक जताया। ये वाक़या मुझे यकीन दिलाता है कि हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा और हम सब मिलकर अपनी कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। ज़मान पार्क जिंदाबाद #। Wow, okay. So, and then there is obviously an English translation of the whole thing as well. So there you go. So that was a brief testing phase or testing video that I did on Chat GPT for Bing AI, or and the capabilities that it has when it's paired with Twitter. I hope आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप और जानना चाहते हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है, स्पेशली अगर इसको हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट की साइड पे ले जाएं और ऑटोमेट कर दें चीज़ों को कोडिंग के ज़रिए, तो प्लीज़ इसको ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। आई वाज अबाउट टू से चैट बॉक्स, और बताइए। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आई है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इससे काफ़ी हौसला मिलता है। और बताइएगा इफ़ यू वांट मोर ऑफ दीज वीडियोस। आई एम इंटेंडिंग टू मेक सीरीज ऑफ दीज AI वीडियोस जहाँ पर सिर्फ चैट GPT नहीं होगा, दूसरे मॉडल्स के बारे में भी और उनकी रिसर्च पेपर्स के बारे में हम बात करेंगे। इफ़ यू वांट मोर ऑफ दैट प्लीज़ टेल मी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।